Now, how to reduce SS sensitivity, how to tackle the problem of SS sensitivity and penicillin. First of all, look here. This is carbonyl carbon. This is the side chain. इसको आप समझे, इसको याद रखिए भाई. Once the carbonyl carbon is more electropositive, so oxygen will be more electronegative, and this form will be the most stable form of carbonyl carbon, and the most stable form mean the non-reactive form. अब इसमें देखें, अगर this variable group R is electron donating group, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हो तो दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बोनाइल कार्बन. वंस दिस आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बोनाइल कार्बन, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगी. अब इधर है कि इधर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, तो मीन ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एनवायरनमेंट, तो दिस इज़ लीस्ट अनस्टेबल है. ये आसानी से रिएक्ट कर सकता है, ये आसानी से दिस विल ट्राई टू रिएक्ट विद एनी अवेलेबल एजेंट्स. सो इन दिस फॉर्म द मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, एंड इट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली. हम इसको ओरली नहीं ले सकते इस तरह के पेंसिलिन को, अलबत्ता वी कैन इंजेक्ट. ये पेंसिलिन है, इसमें अगर ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, लेकिन अगर ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो, तो दिस आर ग्रुप विल विड्रॉ electron from this carbon, and this carbon will become more electronegative, more electropositive. When this carbon is more electropositive, this will be more electronegative. This is very stable form. Once this is very stable form, if you connect the variable group or electron withdrawing group, so you are creating a stable penicillin, and we can use orally. For example, in ampicillin, there is electron withdrawing group NH2. आप उसकी structure देख ले. So we can we can resolve. We cannot stop this ring strain. We cannot. We haven't any remedy to stabilize this beta carbonyl carbon, but we can decrease these effect to stop this ट्राइसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ इसके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि ये आर ग्रुप जो है, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग.